Hello viewers, in today's module I will be teaching you about the 14 principles of management given by Henry Fayol. But it is necessary to first discuss about the Henry Fayol. So Henry Fayol was basically an engineer and he introduced the 14 principles, and these principles are based on administrative functions, and these principles help the managers to manage the administrative tasks. Therefore, he is known as father of administrative management. Remember that in previous lecture I told you that the father of scientific management is F.W. Taylor. Similarly, the father of administrative management is Henry Fayol. These principles are published in a book of general and industrial management, and these basically act as a guideline for decision making. ये सारे principles help करते हैं managers को to take the important decisions of an organization. So let's start one by one. The first is division of labor. Division of labor basically means that work should be divided into the smaller parts and divide them on the basis of their expertise. Work को हम expertise की base पे divide करेंगे and every person should work or do a particular task on the basis of its specialization. For example, one person is specialized in accounts, so he must do the work of accounts. An other person is expert in speaking and his communication skill is brilliant, so he must work in a marketing department. So in this way, this is the example of division of labor, because division of labor help in less wastage, because no wastage will occur, productivity will increase, and also it reduces the risk. Now the second one is balancing authority and responsibility. So before discussing the balance, it is necessary to distinguish what is authority and what is responsibility. Authority is basically power to make decisions. जो आपको power है कोई decisions लेने की, that is authority. While the responsibility क्या होती है is an obligation to complete assigned job on time. आपकी responsibility, आपकी obligation that you have to perform certain tasks on time. So according to this rule, the authority must be balanced with the responsibility, because if authority is higher than responsibility, then क्या result होगा? Irresponsible behavior होगा. And if the responsibility is higher than authority, then it will result in ineffectiveness. So they must go together. The third is discipline. Discipline said that there must be a proper obedience and respect. यहाँ पे employees में आपस में discipline होना चाहिए, respect होनी चाहिए, obedience होनी चाहिए, सब अच्छे से अपना काम करें with the proper rules के साथ. And it is often a part of core values of mission statement. हमारी अक्सर core values में हमें बताए जाते हैं what are the disciplines of a company. एंड यही मैनेजमेंट प्रिंसिपल असेंशियल है हेल्प करने में कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन करना है. सो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट टास्क कि डिसिप्लिन होना चाहिए अमंग द एम्प्लॉयज़. Now the fourth one is unity of command. According to unity of command, person should get order from only one boss. हमेशा पर्सन अगर किसी से ऑर्डर लेगा तो वो जस्ट वन होगा, बिकॉज नो विथ टू बॉसेस, बिकॉज इट विल क्रिएट अ ग्रेट कन्फ्यूजन chores, and the employee may be disheartened or discouraged, or sometimes really becomes inefficient due to confusion that two bosses are giving them authority. So it is preferable that only one boss should be there. The fifth one is unity of direction. According to this principle, that all the employees, all managers, subordinates or superiors must work together in a unity to
basically work on a same objectives. As you know कि basic goal company का एक ही होता है, and also the mission and vision. So all has to work for that particular mission and vision. All must be united, all departments, either the sale, marketing, finance, HR department, their common goal is to achieve the objectives that directly fulfill the organization's mission and vision. Number 6 is subordination of individual interest to the general interest. According to this, the interest of one individual should not be prevail over the general good. It means subordination है कि you must compromise your interest. आपको सबसे पहले देखना है the organizational goals. Then you prefer your personal goals because personal goals are inferior as compared to the organizational goals. The individual interest should be given less importance. हमेशा individual interest को less importance देनी चाहिए और organization के general interest पे ज़्यादा focus करना चाहिए. The 7th is remuneration. Remuneration basically means a reward, and it is given for motivation of the employees, because the employees are working and they can only be motivated if they get a particular reward, either in the form of monetary reward or in the non-monetary reward, tangible or intangible form. So this remuneration should be attendant with the efforts that they put in. जितने वो efforts लगा रहे हैं उसी हिसाब से उनको जो है rewards मिलने चाहिए, and these can be, as I already told you, that monetary or non-monetary, and at that employees must feel that was appropriately rewarded for his efforts. सब एम्प्लॉयज़ को इक्वली ट्रीट करना चाहिए और जिन्होंने जितना एफर्ट लगाया उसके हिसाब से ही उनको रिवॉर्ड देना चाहिए. सो एट द एंड ऑल द एम्प्लॉयज़ मस्ट बी satisfied that they get whatever they deserve. 8th is centralization. Centralization basically means that almost the basic decisions are taken or are in the hands of few, not in the hands of many people. Centralize का word ही पता चलता है कि एक बीच में कंट्रोल है, very limited लोगों के हाथ में डिसीजन मेकिंग दी गई है. सेंट्रलाइजेशन उसे बोलते हैं जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जब जो ड्यूटीज़ हैं वो लिमिटेड हैंड्स में हो, तो ये सेंट्रलाइजेशन है. एंड इट्स ऑपोजिट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन. इट मीन्स जब आप अथॉरिटी, जो पावर है, आप बहुत सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हो. सो व्हेन देयर इज़ अ सेंट्रलाइजेशन, यानी लिमिटेड हैंड्स में जब आपकी अथॉरिटी होती है, दैन डेफिनेटली डिसीजंस आर टेकन क्विकली, डिले नहीं होता डिसीजंस में. सेंट्रलाइजेशन से ये बेनिफिट होता है, बट डिसेंट्रलाइजेशन से भी अपने एक बेनिफिट्स होते हैं. विद द डिसेंट्रलाइजेशन द एम्प्लॉयज़ आर सेटिस्फाइड के उनकी भी कंट्रीब्यूशन है डिसीजन मेकिंग में. बट अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल क्या होना चाहिए? सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, नॉट डिसेंट्रलाइजेशन. नाउ 9th इज स्केलर चेन. हेनरी फेयोल्स ने बोला दैट देयर शुड बी क्लियर लाइन इन द एरिया ऑफ अथॉरिटी. अथॉरिटी क्लियरली आइडेंटिफाई होनी चाहिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम कि किसकी क्या अथॉरिटी है, कौन किसको रिस्पॉन्सिबल है. फ्रॉम टॉप टू लो क्लियरली हमें शो होना चाहिए थ्रू हायरार्की कि दिस पर्सन इज़ रिस्पॉन्सिबल और दिस पर्सन विल गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ टू अदर्स. This can be seen as a type of management structure. यहाँ scalar chain means है एक management structure जो clear होना चाहिए. Each employee can contact a manager or supervisor in emergency situation without challenging hierarchy, especially when it concerns reports about calamities to the immediate managers and superiors. यहाँ basically hierarchy को disturb नहीं करना है. Whatever the पर्सन इज़, जिस हिसाब से अथॉरिटीज़ डिवाइड हुई हैं, टॉप है, टॉप के बाद जो लो लेवल पे आ रहा है तो लो लेवल वाला उसी से डायरेक्ट इंटरेक्ट करेगा जिसको वो रिस्पॉन्सिबल है, नॉट डायरेक्टली टू द अपर मैनेजमेंट. बट इन सम केसेस वो कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ओनली इन अ केस ऑफ एमरजेंसीज. नाउ द 10 इज ऑर्डर. What is order? Order basically means that employees must have right resources. उन्हें right resources दी जाएँ ताकि वो properly function करें. If they don't provided the proper resources तो क्या होगा? They will not work.
इवन दे बेसिकली डेस्परेट टू वर्क, बट अगर उनको आपने रिसोर्सेज नहीं दी प्रॉपर, लाइक कोई अगर प्रिंटिंग का काम कर रहा है, उसका प्रिंटर सही से काम नहीं कर रहा, तो वो कैसे काम करेगा. इन एडिशन टू social order, the work environment must be clean, clear and tidy. Of course, along with resources, आपका वर्क environment जो है supportive होना चाहिए. The peers, the subordinates and superiors must be supportive and friendly. कि अगर कोई problem हो, any kind of difficulty someone faces, then other will support him. So this is the order. Now comes to equity. According to Henry Fayol, employees must be treated kindly and equally. Henry Fayol ने ये कहा कि employees को equally treat करना है, किसी को superior जो है treat नहीं करना. Employees must be in a right place to do the things in right way. Managers को supervise करना है और monitor करना है उस process को कि सारे employees फेयरली ट्रीट हो रहे हैं और कोई सी के साथ इम्पार्शली, मतलब जो है ना, आप पार्शली बिहेव नहीं कर रहे हो और इनजस्टिस नहीं कर रहे हो. इक्विटी इज बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट. नाउ द 12 इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल. टाइम पीरियड पर्सनल का. नाउ पर्सनल का टाइम पीरियड स्टेबल तब होगा व्हेन यू गिव देम अ गुड एनवायरनमेंट. जब हमारे पास बैड मैनेजमेंट होती है तब ही इनस्टेबिलिटी आती है. इनस्टेबिलिटी मीन्स कि टर्नओवर ज़्यादा हो रहा है, एम्प्लॉयज़ आर कमिंग एंड गोइंग, मैनी ऑफ द एम्प्लॉयज़ आर गोइंग, बिकॉज यू कैन सी कि जब एम्प्लॉय स्टेबल होते हैं, टर्नओवर रिड्यूस होता है, तब ही काम अच्छे से हो रहा होता है और जो है एम्प्लॉयज़ एक दूसरे को पहले ही अच्छे से जान रहे होते तो एक साथ अच्छे से काम करते हैं. बट अगर टर्नओवर जो है बहुत ही जल्दी टर्नओवर हो रहा होता है तो इंसान क्या है कि एक दूसरे के साथ स्टेबल नहीं हो सकते और टीम वर्क नहीं कर सकते. मैनेजमेंट स्ट्राइव टू मिनिमाइज एम्प्लॉय टर्नओवर. यहाँ ये बात हो रही है कि मैनेजर्स को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो एम्प्लॉय टर्नओवर को रिड्यूस करें. एंड टू हैव द राइट स्टाफ इन राइट प्लेस. राइट स्टाफ को राइट प्लेस पे राइट टाइम पे मौजूद रखे. फोकस एरियाज़ यही होनी चाहिए कि फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ पोजीशन, सफिशिएंट डेवलपमेंट मस्ट बी मैनेज वेल. कि अगर कोई पोजीशंस चेंज हो रही है, सफिशिएंट डेवलपमेंट हो रही है, तो उसे वेल मैनेज किया जाए. टाइम जो है जॉब का उसे मैनेज किया जाए. जॉब सिक्योरिटी दी जाए एम्प्लॉयज़ को. इट्स ऑल अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल. द नेक्स्ट इज इनिशिएटिव, दैट इज़ 13 पॉइंट. ये कहता है दैट एम्प्लॉयज़ मस्ट बी इनकरेज टू पार्टिसिपेट एंड टू गिव or share the new ideas. As in previous lecture I told you about F.W. Taylor where there is no initiative, जहाँ पे the employees were not allowed to take initiatives. But in this point यहाँ 13 point of जो है Henry Fayol said that employees को encourage करना चाहिए ताकि वो वैल्यू ऐड कर सके कंपनी की, जो है प्रॉफिट्स में वैल्यू ऐड करें. उसके अलावा वो अपनी आइडियाज़ शेयर कर सके दैट व्हाट न्यू पॉइंट्स दे हैव, क्योंकि क्रिएटिविटी ही हमेशा जो है सक्सेस की तरफ ले जाती है. एंड न्यू आइडियाज़ ही हैं जो हमारे जो है प्रॉफिट को इंक्रीज़ करते हैं और न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाने में हेल्प करते हैं. According to Henry Fayol, this encouraged the employees to be involved and interested. Definitely, when you give them the opportunity to speak and to share their new ideas, then definitely employees are getting more involved and are more motivated to do the work. वो और ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और ज़्यादा अटैच हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ. Now this is the last point, ESPRIT the corps, and according to this concept, there must be the unity among all the employees. Managers are responsible for development of morale in the workplace, individually and in the area of communication. ESPRIT the corps contribute to development of culture and creates an atmosphere of mutual trust and understanding. ESPRIT the corps basically means, as you can see in this picture, that is unity is power. The most important thing is unity. यूनिटी सबसे बड़ी पावर है. इफ़ यू आर यूनाइटेड टुगेदर देन यू कैन वर्क इन अ वेरी गुड वे. जब यू हैव अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यू हैव अ ट्रस्ट अमंग देम, एम्प्लॉयज़ का आपस में ट्रस्ट है, देयर विल बी लेस कॉन्फ्लिक्ट्स लेस होंगे, तो डेफिनेटली एम्प्लॉयज़ अच्छे में काम कर सकेंगे. स्ट्रेस रिड्यूस होगा और जब स्ट्रेस रिड्यूस होगा
the efficiency will be increased, and definitely motivation level also will be increased. So this is the last part, and this is based on unity. ESPRIT, the card basically stands for striving for involvement and unity of employees. I hope you all understand these 14 points. So this is my last point, and now the lecture is ended. So if you like this lecture, then kindly like it and do a comment to appreciate me, because I'm doing a lot of efforts. So I need your appreciation. You can like and do comment so that I can improve more and more, because this will encourage me. Okay, and kindly do subscribe my channel. And if you want the latest video updates, then hit the bell icon. Thank you. Allah Hafiz, sweet members.